Hello everyone, this is the short update about the Polycab India's Q3 FY22 result. So let's go to the investor presentation which the company filed with the exchanges. Here is one picture in front of you, the first picture, which depicts the key highlights of this quarter. Okay, the next picture is better where you can see the things graphically. So this is the new picture. As you can see, Q3 FY22 revenue compared with Q2 FY22 and Q3 FY21. So from left side to right side, Q3 FY21, Q2 FY22, and finally on the right hand side, the pink dark purple column is a Q3 FY22 in all three figures. Revenue stands, the figures are in millions at 3,372 crores. So YOY there is a 23% growth, which is pretty impressive. QOQ basis also there is 12% growth. That is also impressive. So revenue is very important figure, and that stands intact. 3,372 crores. That is, company crossed the 3,000 crore figure for quarterly revenue, which is very important from sustainability point of view. Okay, EBITDA. Now EBITDA margin stands at 10.7%. ठीक है, YOY बेसिस पे ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, it's 3%. But what I want to highlight that company could QOQ बेसिस पे तो अच्छा ग्रोथ है, मार्जिन ग्रोन 24%. बट ठीक है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, द कंपनी इज एबल टू negate or sustain through this inflationary pressure. That is very important for the investors to look at, because ये थोड़ा क्या है, raw material consumption is very heavy when it comes to wires and cables, whether it is raw copper, whether it is the other polymer products, plastic products. So इसमें इनका ज़्यादा पैसा इसमें जाता है. It's not नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर जहाँ पे आपको हाई मार्जिन दिखे, इनका ज़्यादातर खर्चा रॉ मटेरियल के ऊपर होता है, एंड दैट्स वाई द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर वेरी हेवी ऑन सच कंपनीज. बट पॉलीकैब इज एबल टू सस्टेन EBITDA margins. I won't say it's very good, but looking at the industry, it's good. It's good. So 10.7. Again, I would say it good figure looking at the industry. Now PAT 7.5%, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर, एज ए सेड इन्फ्लेशनरी थोड़ा ज़्यादा आया है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है. बट एट 7.4% इट लुक्स फाइन. QOQ ग्रोथ है, बट लास्ट क्वार्टर में भी तो इन्फ्लेशन था. अब इन्होंने प्राइसिंग बढ़ा के डेफिनेटली दे ट्राई टू कम ओवर दैट, बट absolute net profit margin stands at 7.4% in this quarter. So I think this is okay. This is fine for the company, which is one of the largest wires and cables company in India, and growing at this pace is fine. 9 monthly figures are in front of you. This is a 9-month figure. So impressive, or everywhere you can see growth. Revenue में तो 40% growth है YOY. I think this is one takeaway which will give boost to stock. Stock is now around 2,500, and price to earning ratio जो 30-31 के आसपास था, अभी आगे 40 प्लस भी गया था. It's fine when you look at the revenue growth of 40%. It's fine. The valuation is price to earning ratio is one of the key parameter. वही अपने देखना चाहिए. That is under control. It's not very high, and there are new emerging opportunities about which I have already discussed in the previous video. I'll discuss now also, but let's complete this. So EBITDA margin at 9.6% for this 9 months.
पैट मार्जिन 6.3% थोड़ा कम हुआ है. रेवेन्यू बढ़ा है बट पैट मार्जिन कम हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर. वायर्स एंड केबल्स बिजनेस कैसा कर रहा है ये आपके सामने पिक्चर्स एज यू कैन सी. वायर्स एंड केबल्स का रेवेन्यू फिगर्स आर इन मिलियंस. Fine. Revenue stands around 2,967 crore in this quarter, which has grown significantly over the last year, 24% YOY. Okay, for 9 months, revenue stands at 7,184 crore. Wires and cables. Fast moving electrical goods. Interesting area where business was witnessing शार्प ग्रोथ. ठीक है, 11% YOY ग्रो हुआ है रेवेन्यू इन दिस क्वार्टर. EBIT हैज़ बीन शार्पली वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. ये रिटेल पार्ट है तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया है. एज यू कैन सी इट वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली 65%. ओके, ऑन 9 month फिगर्स रेवेन्यू बढ़ा है बट EBIT फिगर्स वेंट डाउन 72%. सो दिस इज द कंसर्न. बट आप देखिए इनका 7,000 करोड़ रेवेन्यू है, 7,200 करोड़. उसके अगेंस्ट ये रेवेन्यू सिर्फ 875 करोड़ है. तो उतना ये इम्पैक्ट नहीं करता ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को. तो दैट्स वाई इट इज़ जस्ट अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम विच दे हैव डेवलप. और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे. Fan business was subdued. Lights, pumps and conduit pipe business continued healthy growth. Work on distribution expansion, portfolio optimization, brand architecture, augmenting influencer management program is progressing well. These initiatives form a critical engine to drive profitable market leading growth over the mid to long term. तो ये कमेंट भी कंपनी ने किया है. December weaker trade and consumer sentiments, that is one of the reason. And third wave also mentioned by the company, the third wave of COVID-19. Okay, fine. Other segments, okay, EPC business is not that significant figure, so let's not go through that. This was about the Q3 FY22 result brief update. Abhi, what I feel, this company is in a position to grab some of the very important developments in the ongoing ecosystem. First of all, the electric vehicle, एक electric ecosystem, clean energy, green energy, electric vehicle revolution, electric बेस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस. इसमें पूरी जगह चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पे वायर और केबल लगने वाले. एंड दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन दिस सेगमेंट विच प्रोवाइड्स वायर्स एंड केबल. इसके अलावा मैंने कई बार ये भी कहा है कि अदर कंपनीज लाइक KEI इंडस्ट्रीज एंड फिनोलेक्स केबल्स एंड वायर्स इज़ ऑल्सो वी कैन लुक एट दिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि ये क्या, इसमें बहुत लिमिटेड कंपनीज है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है. अराउंड 50% मार्केट इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो इनको काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इन कमिंग ईयर्स. एंड दैट्स वाई थिंग्स फॉल इन प्लेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. और एक बात, होम ऑटोमेशन लाइटनिंग सॉल्यूशंस, और इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज ग्रोइंग. द कंपनी इज इन पोजिशन टू टैप दिस FMEG सेगमेंट एज वेल एज दिस न्यू अपकमिंग वे ऑफ होम ऑटोमेशन. सो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोज़ में. दैट वॉज अपडेट अबाउट Polycab India for Q3 FY22. Thank you for watching the video. Do share and subscribe to this channel. I keep on sharing number of pictures and text on this YouTube channel itself. Subscribe to our Twitter handle and Instagram page for more such updates. Thank you.